Okay, so hello everyone. This is Mohammed Saad, and today I'm here to take a very short lecture on the topic cell, by which I'm going to participate in the Teachmint competition that is being organized by the group of Teachmint. So please एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके साथ साथ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने लोगों में, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जो भी जेन्युइन कमेंट आपको लगता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज सेल। नाउ व्हाट वी नो when we hear about a word that is cell, that we will cover with certain things. So let me share the screen now. Now, what is cell basically? Cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. Or we can say that cell is the fundamental unit of life. Okay. Now, what this basic or fundamental means कि ये जो लाइफ है वो सेल के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी अगर सेल है तभी लाइफ है, वरना लाइफ बिना सेल के एग्जिस्ट नहीं करती है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक यूनिसेलुलर हो लाइक अमीबा, प्रोटियस, और यू कैन से पैरामीशियम, ओके, और मल्टी सेलुलर हो like fungus, like plants, like animals, और यूनिसेलुलर में मैं एक मींस मोनेरंस का भी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम ई कोलाई का एग्जांपल ले सकते हैं, इशेरिशिया कोलाई, दैट इज अ बैक्टीरिया। वी कैन टेक द विब्रियो कॉलरी, दैट इज अ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मींस दीज आर व्हाट द प्रोकैरियोट्स, and these are what the eukaryotes, means all the living organisms which are present around us that we can see with our naked eye, or we cannot see with our naked eye. We have to use the tool like microscopes. So these organisms are all made of cell. That is one of the meaning of basic or fundamental unit. Means जितने भी organisms होते हैं उनका structure सेल का ही बना होता है। जैसे अगर हम एक दीवार को देखते हैं, तो जैसे एक दीवार सेल्स की बनी होती है, सॉरी ब्रिक्स की बनी होती है, जैसे एक दीवार ब्रिक्स की बनी होती है, तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, या एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, या एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, ऑब्वियसली वो सेल का ही बना होता है। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ दिस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट इज द सेकंड मीनिंग ऑफ दिस? सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस इज कि जो भी बॉडी, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट, या एक मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हो, तो उन सब का जो फंक्शन होता है, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, whatever function they perform, they perform the function of locomotion, they perform the function of digestion, they perform the function of defense, whatever function they perform, all these functions are only due to cell। यानी कि अगर वो सेल परफॉर्म करेगा तभी वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा, या उस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो ये जो हम कहते हैं कि all organisms are made up of cells and all the functions of the organism are due to the function of the cell, यही मतलब होता है बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। मतलब अगर सेल है तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ है, यानी एग्जिस्ट करेगा, वरना अगर सेल नहीं है तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट द सेल इज, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ कमिंग टू सेकंड थिंग,
Now what this cell is made of, that is parts of cell. ये सेल किसका बना होता है? अब इस चीज को हमें देखने के लिए मैं एक टिपिकल एनिमल सेल को लूंगा यहां पे. एज यू कैन सी that I have taken the typical animal cell here, and we will study with this 3D diagram about the parts of the cell, and we will study the basic parts. Okay, now as you can see that this, the outer boundary, the boundary, okay, the boundary of the cell, this is known as what? Cell membrane. Here I have taken a typical animal cell. Okay, this is the cell membrane which forms the boundary, and this is the living part of the cell, and it holds on all the components of the cell. Now in the center, what you can see, a round globe-like structure having pores, and this is very important structure, the second part of cell, that is called what? The nucleus. And the pores which are present over here, through which the ribosomes, through which the RNA that moves in and out, means influx outflux takes place, that is the nuclear pore which is present on the surface of the nucleus. Okay, now coming to the third part, which is very important, that is present between the nuclear membrane and the cell membrane. This is the part where all you can see all the other structure, and this is known as cytoplasm. That is a jelly-like structure. That is a jelly-like structure. Now, this cytoplasm contains various organoids, small bodies which perform different functions of the cell. Means this one is mitochondria, which is known as the powerhouse of the cell. It produces energy in the form of energy currency, that is known as ATP. Okay, now this is known as the endoplasmic reticulum, that is ER. And it has got many function. It has two parts, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. The difference is the presence of ribosomes. If the ribosomes are present attached on the surface, that is rough endoplasmic reticulum, and if not, that is smooth endoplasmic reticulum, and they perform very important functions in the cell, like protein synthesis, like cholesterol synthesis, like you can say detoxification in the body. Means there are various functions, but I have to limit myself. Now this is known as what? The Golgi body. Now this Golgi body that is present in animal cell, and the same is called in the plant cell, and they are known as dictyosomes. Means in plants these Golgi bodies are known as dictyosome, and these are helpful in packaging, sorting, and transport within the cell and out of the cell. Okay, now these circular bodies, as you can see, these are what? The ribosomes. These are the ribosomes, and these are the site of protein synthesis. Now here we have covered some of the important parts of the cell. Now as I said earlier, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सेल ऐसे ही है बॉडी में जैसे कि दीवार में ब्रिक्स होती हैं. तो इस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पे एक simulation को देखेंगे, that is due to OLabs. I have used olabs.edu.in, and here we are going to see the cell in the onion peel. हम onion peel में देखेंगे. Now for this we have to use the microscope. हम microscope की बात करेंगे यहाँ पे. So this is the microscope, and the stage has this one, that is the you can say glass slide, and on this glass slide we have our specimen that is from the onion peel. Means हम onion peel से देखेंगे. See this. For this we take onion, we take the dye, okay, and we take water and other things. See, now I have put here. Now if we see the binocular view of the same onion cell, see here. Now we are seeing under low that is low magnification, that is 10x. Now if I'm doing the adjustment, now see, in the microscope we are going to see the onion cell. See here. Now this is what the cell wall, this is the nucleus, and we are seeing the cells properly and very beautifully arranged in an onion peel. In the real sense and in the real form, this appears
the same, यानी एकदम ये ऐसे ही दिखते हैं. Let me show you. If you will prepare it, let us see the images. See this. This is the real picture, as you can see over here. Okay, so these are the cells, that is the onion cells, as we can see. तो जैसे मैंने बताया था, जैसे एक दीवार में ब्रिक्स होती हैं, वैसे ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल्स अरेंज होते हैं, और ये सेल्स फंक्शन करते हैं तो बॉडी या उसके ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, और ये सेल जो है उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कॉल द सेल एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये लेक्चर था मेरा, छोटा सा एक शॉर्ट लेक्चर, एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लोगों में, एंड रिक्वेस्ट देम टू वॉच एंड comment on this video too when it will be uploaded on the YouTube. Thank you all. Thank you for joining. Okay, students. चलो सब अपनी अपनी वीडियो ऑन करो. Just a look. Yeah, these are my students. They are very supportive, and because of them I've just planned to take part in this competition. Okay, thank you all. Okay, bye, take care, and do good preparation for your boards. मिलते हैं क्लास में. Okay, thank you.